Hello everyone, especially foodies and all the English enthusiasts. Welcome back to my channel, Hi Some Academy. It's me, Sumbul Rizvi, an English language fluency expert. So today we are having something different and unique on the menu. Not food, but the food idioms. So ever wonder why do we say things like spill the beans or piece of cake? I mean, like if we talk about beans, so beans are meant to be eaten, not spilled. Similarly, if we talk about cake, so if they are around, so we are not going to spare them. So why do we say things like this? So get comfy and grab a snack because today we are diving into the tastiest idioms out there. So if you are someone who likes to be a big cheese in the kitchen or someone who likes to chew the fat on the Friday night, we have got you covered. Because in this video, I am going to provide you 30 English idioms or advanced phrases that you can easily use whenever you would like to talk about something related to food or someone's eating habit. So without any further ado, let's get started. But before starting this video officially, I would like to request everyone to please subscribe our YouTube channel because हमारे एनालिटिक्स ये कहते हैं कि वो तमाम लोग जो कि हमारी वीडियोस को देखते हैं वो ज्यादातर हमारे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं. सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल ताकि हम जो भी वीडियो रोजाना बनाते हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सके और आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ सके. सो इफ यू रियली वांट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इफ यू रियली वांट टू वर्क अपॉन योरसेल्फ, if you really need to boost up your confidence level and want to expand your vocabulary, so you must subscribe our YouTube channel. So the first one is wolf down. Wolf down का मतलब होता है कुछ बहुत जल्दी खाना. To eat something very quickly. Like for example, after skipping his breakfast, he wolfed down his lunch in just few moments. Nibble on. Nibble on का मतलब होता है कुछ छोटे छोटे bites में खाना. To eat something in small bites. Like for example, she wasn't very hungry at that time, so she just nibbled on a few crackers. Next one is eat like a pig. Eat like a pig का मतलब होता है बहुत सारा खाना and to eat greedily. Greedily का मतलब होता है सब कुछ अपनी प्लेट में भर लेना चाहे आपने एंड में उसको छोड़ ही देना हो. So when someone eats like very much and very greedily, so then we can use eat like a pig. Like for example, after a long hiking day, he was so tired that he ate like a pig. इसी का एक एंटोनिम ये समझ लें, एक ऑपोजिट इडियम होता है जिसे हम कहते हैं eat like a bird. Eat like a bird means to eat something very little, बहुत थोड़ा सा खाना. Like for example, she always eats like a bird at dinner parties. वो हमेशा डिनर पार्टीज में बहुत थोड़ा सा खाती है. Dig in. Dig in का मतलब होता है खाना देखते के साथ ही उस पर टूट पड़ना. To eat something instantly and enthusiastically. For example, as soon as the meal arrived, everyone couldn't wait to dig in and start eating it. The next one we have is comfort food. Comfort food is basically a food that brings comfort and peace to you. Like when you eat it, so you feel good. होते हैं ना कुछ खाने जिन्हें खाने के बाद हमें बहुत अच्छा फील होता है. Those foods are basically your comfort food. Like for example, after a very hectic day at work, she treated herself to some cheeseburger, and that's her favorite comfort food. The next one is eat to live but not live to eat. Like होते हैं ना कुछ people जो कि खाने को फ्यूल की तरह नहीं बल्कि प्लेजर की तरह देखते हैं. तो ये इडियम उन लोगों के लिए है कि जो खाने को फ्यूल की तरह देखते हैं बल्कि प्लेजर की तरह नहीं देखते. Like for example, you can say that many people are so obsessed with the food, but I believe in the motto that eat to live but not live to eat. The other expression we have is to have a sweet tooth. Sweet tooth का मतलब होता है to love sugary food or love sugary items. यानी कि अगर आपको मीठा बहुत पसंद है, so it means that you have a sweet tooth. Like for example, one of my friend has a sweet tooth, so that's why she can never resist on a scoop of ice cream or maybe a slice of chocolate cake. लेकिन कौन करेगा? I mean, कोई भी खा लेगा. The next one is to go on a binge. It means to eat a lot in a very short duration of time. होता है ना कभी कभी कोई बहुत ज्यादा भूखा होता है तो वो बहुत सारा खाना बहुत छोटे से अरसे के अंदर ही खत्म कर लेता है. So in this situation you can use this idiom to go on a binge. Like for example, after a very stressful weekend, she decided to go on a binge and she ate a full box of chocolate in one sitting. The next one is watch what you eat.
It means to be mindful of your diet, यानी कि सोच समझ के खाना. For example, after doctor's advice, he actually started to watch what he eats. The next one is a fuzzy eater. Fuzzy eater means to be selective about their food. होते हैं ना कुछ लोग जो कि अपने खाने को लेके बहुत पर्टिकुलर और बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं, कुछ गिनी चुनी ही चीजें खाते हैं. So for those people you can use this idiom, a fuzzy eater. Like for example, when he was a child, so he was really a fuzzy eater, refusing everything to eat. The next one is to cut down on. To cut down on means to reduce your consumption of something. यानी कि जब आप किसी एक particular food item को कम खाना शुरू कर देते हैं, अपनी consumption को कम कर लेते हैं. So for that you can use to cut down on. Like for example, she has decided to cut down on sugar because she is gaining weight. The next one is clean your plate. Clean your plate simply means to finish your food. Like for example, her mother always advises her to clean your plate even if she is not hungry. But ये मुश्किल है यार, this is difficult. यानी कि अगर भूख नहीं है तो कोई खाना कैसे खाएगा, प्लेट कैसे फिनिश होगी. The next one is to have a second helping. यानी कि आपने एक पूरा का पूरा खाना खत्म कर लिया मील, लेकिन अभी भी आप बहुत भूखे हैं और आपने डिसाइड किया कि आप एक दूसरी सर्विंग लेंगे. Like for example, he was so hungry that after finishing his first plate of spaghetti, he decided to have a second helping. The next one is a taste for. A taste for simply means to have a liking of something. यानी कि for example, पहले आप किसी चीज को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब आप उस चीज को पसंद करने लगे हैं खाने से रिलेटेड. So you can use a taste for. For example, after traveling to Italy, now she has developed a taste for pasta. यानी कि उसे पहले पास्ता पसंद नहीं था, लेकिन इटली ट्रैवल करने के बाद अब उसे पास्ता पसंद है. The next one is a craving for. Craving for का मतलब होता है having a very strong desire about one thing. फूड. यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम रात में बैठे होते हैं और अचानक से हमारा दिल चाहता है कोई एक पर्टिकुलर चीज खाने का और हम फौरन से ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो चीज खा लेते हैं. सो दिस इज बेसिकली योर क्रेविंग एंड द एक्सप्रेशन कुड बी अ क्रेविंग फॉर. लाइक फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ अ सडन शी हैड अ क्रेविंग फॉर चॉकलेट केक एंड शी रश्ड टू द बेकरी एंड एट इट ऑल. The next one is a gourmet food. गोमे फूड का मतलब होता है एक ऐसा खाना जिसकी क्वालिटी बहुत हाई हो, हाई क्वालिटी, या बहुत रिच इन फ्लेवर हो वो फूड. तो इसके लिए हम यूज करते हैं अ गोमे फूड. लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन दे विजिटेड अ 5-star रेस्टोरेंट, से दे सर्व्ड अ गोमे फूड. द नेक्स्ट वन इज टू फील पिकिश. फील पिकिश का मतलब होता है हल्की हल्की भूख लगना. कभी कभी ऐसा होता है ना कि शाम की टाइमिंग पे हमें बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती, लेकिन हल्की फुल्की भूख लगती है. सो फॉर दैट हल्की फुल्की भूख यू कैन यूज द एक्सप्रेशन टू फील पिकिश. लाइक फॉर एग्जांपल, शी वाज नॉट फीलिंग too much hungry, but she was a little bit peckish, so that's why she grabbed an apple. Next one is to be full to the brim. यानी कि इतना ज्यादा खाना खा लेना कि अब कुछ और खाने की पेट में गुंजाइश ना हो. Like for example, after the Thanksgiving dinner, I was full to the brim. यानी कि मैं इतना ज्यादा खा चुका था या इतना ज्यादा खा चुकी थी कि मेरे पास कुछ और खाने की गुंजाइश नहीं थी. Now the next term we have is fast food junkie. Now this is basically an expression which is used to refer someone who likes to eat junk food a lot. Like for example, one of my friends, she is very fatty because she is basically a fast food junkie. अब आइए कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस को सीखते हैं जो कि हम स्पेसिफिकली सिर्फ फूड को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वन इज माउथ वाटरिंग. माउथ वाटरिंग का मतलब होता है ऐसा खाना कि जिसे देख के ही मुंह में पानी आ जाए. अ फूड दैट लुक्स एंड स्मेल्स लाइक अमेजिंग. The next one we have is finger licking good. Finger licking good का मतलब होता है ऐसा खाना कि जिसको खाने के बाद आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं. होते हैं ना कुछ खाने जो बहुत टेस्टी होते हैं. So for those foods you can use this particular expression, finger licking good. Like for example, last night I went to a party and food was served and that was finger licking good. The next one is as fresh as a daisy. यानी कि कुछ खाने ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत फ्रेश लगते हैं, जिन्हें सामने टेबल पर आके रखा जाता है, सर्व किया जाता है, and they look like so fresh. So for those fresh foods you can use as fresh as a daisy. Like for example, last night once again I went to a party and the food that was offered by the host, it was as fresh as a daisy.
द नेक्स्ट वन इज मेल्ट इन योर माउथ, यानी कि कुछ खाने ऐसे होते हैं कि जैसे ही आप उन्हें खाते हैं वो जाते के साथ ही आपके मुंह में घुल जाते हैं. Something that you eat and it will gonna immediately dissolve in your mouth. So for those foods you can use melt in your mouth. Like for example, gulab jamun. Now there are two different terms, overdone and undercooked. Overdone is basically a term that is used for that food जिसको इतना ज्यादा पकाया गया कि वो overdone हो गया, यानी कि उसका टेस्ट बहुत ही रफ और ड्राई हो गया. So रफ और ड्राई फूड्स के लिए तब जबकि आपने उनको ज्यादा पकाया, you can use the term overdone. Similarly कुछ खाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप कच्चा ही छोड़ देते हैं, कच्चे पक्के बने हुए होते हैं वो. So for those कच्चा पक्का खाना you can use the term undercooked. The next term we have is rich and creamy. Rich and creamy is basically used for desserts because usually desserts are very smooth and very flavorful. So something which is very flavorful, usually for desserts, you can use this term rich and creamy. The next one we have is piping hot. कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी पार्टी में जाते हैं और वहां ऐसा खाना सर्व किया जाता है जिसमें से धुएं निकल रहे होते हैं. तो जिस खाने में से धुएं निकल रहे हो यानी कि वो इतना हॉट हो कि जैसे अभी अभी आपने उसे माइक्रोवेव ओवन में से निकाला है और सर्व कर दिया है. So for that extremely hot food you can use the term piping hot. The next one we have is tender. Tender is something which is very soft. You can easily cut it. You can easily chew it. Usually this term tender is used for meat. हम कहते हैं ना कभी कभी कि this meat is very tender. इसका मतलब क्या है कि ये बहुत soft है, ये आराम से चबाया जा सकता है. So tender is used for meat. And the last expression of this video is to go on a diet, which is really important. To go on a diet means to start following a proper diet plan according to your height and weight, and it is actually very healthy. तो वो तमाम लोग जो कि अपने कुछ weights को reduce करना चाहते हैं, shed करना चाहते हैं, so they can go on a diet. Like for example, one of my friend is planning to shed her weight. That's why she is planning to go on a diet. Okay guys, so thank you so much. That's all for today. I hope you guys enjoyed and liked this video, and if you found this helpful, so please like, comment and share, and don't forget to subscribe our YouTube channel to learn more. And all the expressions that I have provided you in this video, please go through them, learn them, and try to use them whenever you want to describe someone's or your eating habit to someone else, or whenever you want to describe food. So always use these expressions because they are really helpful and they will definitely gonna spice up your conversations. So thank you so much for watching this video, and don't forget to hit the bell icon so that you would never miss on any update. Thanks for watching.